मेरे ख़िलाफ़ जुलूस भी निकले हैं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं. I was called a terrorist on national TV or something like a terrorist, which is a unique one in my resume, I suppose. But you know, you do pause and think, okay, is there any, besides the tone, is there any truth to this? For 6 years, Daftarkhwan has been building a community of entrepreneurs and professionals. And the fireside chat is actually one of the things that it does, where it connects with those wonderful leaders and learns from their experiences and kind of shares those learnings with the audience. Today, we're welcoming Dr. Mariam Chughtai, Director of the National Curriculum Council in Pakistan. I'm your host, Ambareen Baig. I've had about 8 to 9 years of experience working in youth development, but also the entrepreneurship space specifically in Pakistan. I'm currently working with the Accelerate Prosperity as the Regional Insights Lead. This is Daftarkhwan Fireside Chat. Dr. Mariam Chughtai is the founding associate dean and assistant professor at Lums School of Education, Pakistan. She's also the director of Pakistan programs for the Harvard University Lakshmi Mittal South Asia Institute. She has a doctorate in education from Harvard University, specializing in education policy, leadership, and instructional practice. Dr. Chughtai is based in Pakistan and working on her forthcoming book on the politics of making and breaking identity through education in Pakistan. That's a lot of stuff that she does. Welcome, Mariam. My first question to you is, what motivated you to build a career in the education sector in Pakistan? Because we all know that it's really tough. So, मेरी सारी फैमिली जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में है और एक वो जो जज्बा होता है मुल्क को कुछ वापस देने का, इंसान की खिदमत करने का, वो मेरे घर में ही था. और दूसरा ये भी था कि मुझे एक कैपिटलिज्म से शुरू से ही एक थोड़ी सी उलझन होती थी. मैं जो पाकिस्तान में ही बड़ी थी और बाद में अमेरिका में मैं 15 साल रही, तो वहाँ पर भी दूर से वो बहुत all that shines is not gold. I lived in the US for 15 years, but वहाँ पर वो जो एक 9 to 5 scripted lifestyle है, everything has a dollar value. You can buy every single thing. So every experience, emotions, but वो सब कुछ, when everything has a price to it, it becomes very shallow. And so even as I was growing up, I knew that I didn't want to be a purely corporate sort of an employee somewhere. I saw myself quitting that kind of a job. और फिर मेरी family ethos में भी public service थी. Both my parents are retired professors from medical universities. So I didn't go into health, I went into education. I felt that health is a lot of fixing once something has gone wrong, and education is a lot of prevention. And I found a lot of meaning in this profession. That's beautiful. And so in terms of, the most important hard and soft skills that have helped you get to the level that you're at, what can you talk about a little bit of that? And, what do you think are the most important hard and soft skills that you think are important, were important to you? Well, कोई इसमें कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं है, बट ये ज़रूर है कि एक तो बहुत साल पहले से ही, आई थिंक आज से 20 साल पहले से ही, जब मैं अंडर ग्रेड करी थी, ग्रेजुएट स्कूल में भी, आई रिलाइड ऑन टेक्नोलॉजी अ लॉट. कि मेरा पूरा दिमाग जो है वो मेरे गूगल कैलेंडर और मेरी मतलब नोट्स और माइक्रोसॉफ्ट टू डू और उन सब पे डेलीगेटेड है. मेरे दिमाग में हर वक्त स्ट्रैटेजाइजिंग और प्रोसेसिंग की जगह रहती है. तो जितना भी ये टूल्स जो हैं जिनको मैं फिर यूज़ करती रही हूँ to delegate things that I don't have to memorize, so then I can memorize the things that are important for strategy. अब जैसे Asana I'm using for project management at work, so it's hard to make that transition, but once you do and once you start relying on it, so it takes a little bit longer. But you go slow to go fast. So it has helped me to keep my life very organized and to use my time very efficiently. दूसरी चीज़ ये है कि I think एक early years से ही और फिर बड़े होके ख़ास तौर पे मैंने इस पे काम किया कि मैं
अपनी आदत बनाना, जो हाउ टू मेक अ हैबिट की जो साइंस है ना, उसको समझ लूँ कि आप कोई भी चीज़ जो है अगर आप 40 डेज़ तक करते हैं या उसको सस्टेन करते हैं तो पहली दफ़ा करना मुश्किल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाउ यू या आप बिल्कुल ग्रेजुअली एक एक चीज़ को करके अपनी ज़िंदगी में लाते. So once you learn how to make a habit, then with time you can really add more and more, not just efficiency to your life, but more things that bring you joy. क्योंकि आप उसमें अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे गुजार रहे हो. I think the soft skill I would say is the ability to build a habit and to stay with it, and the hard skill would be relying on efficiency apps and technology. So I actually want to follow up to that. Is that, you know, a lot of the times I think when you talk about, you know, the things that, the tools that you're talking about, the softwares and like, you know, all of those things, one important aspect of that is the self-regulation, right? Like tying that into the education element and like, you know, when we were talking about learners and like, you know, how they're educated throughout their kind of, you know, life span and everything, like, you know, how do you think about the, you know, kind of how we equip our generations in terms of them being able to kind of just become autonomous learners? I think इस क्वेश्चन के हिसाब से कि ये जो बच्चे आज स्कूलों में हैं, जिस दुनिया में इन्होंने ऑपरेट करना है, जिस दुनिया में ये अपनी पहली नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे या 10 साल 20 साल अपनी नौकरी में होंगे, वो दुनिया आज की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है. और इस वक्त अगर आप देखें, स्कूलिंग इज़ एक्चुअली गेटिंग इन द वे ऑफ लर्निंग. ये बच्चे टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ भी सीख रहे हैं स्कूल से बाहर सीख रहे हैं. स्कूल इनका वो सारा टाइम when they could be actually doing a lot with this, schools have not caught up. Schools are back in the industrial age model. And but what we are doing is through the national curriculum project is we are embedding a lot of activities in classrooms ताकि बच्चों को सिर्फ नॉलेज ना हो, सिर्फ कंटेंट ना पता हो, बल्कि स्किल पता हो कि उस कंटेंट को उन्होंने किस तरह इस्तेमाल करना है. मिसाल के तौर पे आज जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, 2 साल पहले जब ड्राफ्ट बन रहा था, आज वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो रही हैं. सो दिस इज़ द पेस ऑफ हाउ कंप्यूटर एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस इज़ इवॉल्विंग. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप बच्चों को यू डोंट टीच देम what to learn, you teach them how to learn. And by doing that, you also are very inclusive because majority of our classrooms don't have computer labs. Turbat mein there may be computer labs, and there may be electricity, but there's no internet. There may be areas where there is internet but no electricity. So what are we supposed to do? Wait 100 years until everybody has internet and power? So we have to design activities and education and student learning outcomes in a way that students are thinking, okay, how does logical thinking work? How does a Sudoku work? Because those skills later on, maybe in 5 years, जिस तरह हर एक के पास WhatsApp है, who knows in 5 years बच्चों के पास हर एक के पास क्या access होता है. So their mind needs to be able to think like that, so that they are caught up when that time comes. And so kind of going back to, you know, your role and, you know, the work that you do, it's a very public facing role, right? So how do you deal with the scrutiny and, you know, kind of the pressure that comes with being in that sort of a public facing role essentially? I would say there is 2 kinds of pressures. One is an external one and one is an internal one. The more important one is the internal one, because I feel like I'm working very hard, I'm working my best, but many times I feel like, am I doing enough? Because every moment that I'm in public office, I'm paid through taxpayer money. I'm holding a position that someone else could have been holding and doing a better job. So I feel very ethically responsible, and there's that internal pressure that I don't know if I have done justice to this role or not, but it is something that I am very cognizant of. The second pressure, which is the external one, is, you know, some of it is legitimate because education में बहुत कई दहाइयों से बहुत ज़्यादा निज़ाम आपका बिल्कुल neglected है, exploited है. तो और फिर लोगों की मतलब expectation है कि एकदम से ठीक हो जाएगा. So there's sometimes legitimate pressure, sometimes just unfair pressure. उसके साथ deal करने का यही तरीका है that you kind of stay anchored in कि this is my role and this is myself. So many times they will say things to you. मेरे खिलाफ जुलूस भी निकले हैं, protests भी हुए हैं.
I was called a terrorist on national TV or something like a terrorist, which is a unique one in my resume, I suppose. But you know, you do pause and think, okay, is there any, besides the tone, is there any truth to this? And you also recognize that sometimes the attack is on the role and not who I am as a person. So you kind of have to separate them. So what do you like, you know, in more concrete terms, like what are some of the things that you do to cope with that kind of pressure, or like, you know, any sort of like stress that comes with the role that you're in? I actually lean into it. For instance, as they say, if a crocodile bites your leg, you're not supposed to pull out because it'll pull off your leg. You're supposed to kick into the bite and then it lets go. I've never experienced it, that. but I've heard that that's what I will do if a crocodile ever got me. But I'm just saying, you push into the bite. So when I get criticism, I tend to lean into it. I tend to think more deeply about it. I tend to sort of separate it from the bite, from the pain, from the insult. And there is a lot of insult now that there is a digital world. Sometimes I just enjoy it. I admire the creativity. Okay? You know, that was a really nice the time that but put into it. Yeah, but लेकिन ये है कि जब इस तरह का प्रेशर आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये ना देखूँ कि कौन कह रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुनूँ कि वो क्या कह रहा है और वो क्यों कह रहा है, क्योंकि हो सकता है जो बात वो कह रहे हैं that is not the right conclusion, लेकिन वो जिस वजह से कह रहे हैं वो वजह फिर भी बहुत जायज़ है. तो मकसद तो मसले का हल निकालना है ना, तो अगर आप मसला हल कर देंगे तो शायद वो उस तरह की बात करनी भी बंद कर दें. So those are some things I try to do. No, that's really interesting because I feel like a lot of the times some of the criticism is fine, right? Like if it's constructive, it's good, but then I feel like sometimes people kind of get carried away with it and that's when it becomes a problem. But you know, in terms of overall your experience in the, you know, kind of in the industry and everything, have you ever experienced gender discrimination in any way? And if you have, how have you dealt with it? Like, you know, what are some of the things that you have done to kind of, you know, move past it if that was possible? Yeah, I think gender discrimination is a reality around the world. और एक तो उसका standard है कि women get undue advances of you know, a particular kind. This is something that you are constantly aware of. कि आपकी looks पे comment, आपके you know, आप के बारे में assumptions, ये तो है ही. हमारी society में particularly जो आपके informal social relationships हैं वो बहुत important होते हैं. और वो आमतौर पे शाम को लेट नाइट चाय पे कॉफ़ी पे पाकिस्तान में अब अनफॉर्चुनेटली बहुत ड्रिंकिंग कल्चर भी है. ना मैं सिगरेट पीती हूँ, ना मैं शराब पीती हूँ और ना मैं आदमी हूँ, तो और ना मेरी शादी हुई है कि मेरा खावंद मुझे साथ ले जाए कहीं. तो उसकी वजह से सिंगल पीपल एंड पर्टिकुलरली सिंगल वुमेन don't get invited to social events. They're seen as a threat by women and men. Yeah, I've heard this from other people as well, by the way, just by the way. Yeah, no, I get it. It happens a lot. And that is why, क्योंकि फिर आपकी बहुत सारा जो काम होता है, that's restricted to very formal workplace conversations. और workplace पे बहुत से लोग काम नहीं करते क्योंकि वो शाम को बैठ के ये relationships बनाते. But the way I cope with it is, एक तो I understand कि मेरे लिए ये मुश्किल है being a woman in a male dominated profession, but I think it's harder for the men कि वो एक खातून की बॉस आके उनकी लग गई है और उनको उसकी सुननी पड़ती है और झाड़ें भी पड़ती हैं और ये सब. तो I empathize with them कि it's difficult for me, but they are not necessarily the aggressors. They are also a part of this culture. Adjustment उनके लिए भी है और शायद उनके लिए भी ज़्यादा है. दूसरी बात मैं ये करती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ because I know कि मेरे लिए the standard is higher. मेरे लिए गलती का चांस और भी कम है. तो मेरी गलती और भी ज़्यादा prominent होगी if they expect कि I will be in a certain place and ignore certain values of mine. So I don't do that and I don't feel bad about it either. I actually loved what you said earlier. I think and if I'm not wrong, I think the essence of it was that there are informal kind of, you know, structures of power, right? That exist within these organizations that we work in, or like no matter where you are around the world, not just in Pakistan. But I think, so how have you, in your work, how have you kind of dealt with those informal structures of power, right? Like because I feel like a lot of the times when you're a female leader, it's not just that you have responsibility of your own work, but also responsibility of making
spaces of equity for like, you know, other women that you work with as well. Yes. So I think, so how do you, this is just like, I'm really curious to understand how kind of No, I think you answered your question. You make new networks. So मेरे office में I have really normalized young mothers. Young mothers are an untapped resource, human resource. I tell you, they work very hard. They're very good at multitasking. And if you make a certain, जो अब pandemic के बाद, in any case, the corporate 9 to 5 lifestyle has been outdated. You let them work virtually, you let them work task-based, and you hold them accountable on deadlines. And then you give them the flexibility, school pickup, drop-off, बच्चे का parent-teacher meeting and all that. आप task-based करें, you don't need to have long meetings in the office. आप, you know, and those are new kinds of informal networks that you can make that have a lot of potential in them. So in my office, when I joined, I said, okay, listen, actually it's a funny story, a guy, an important person came to my office and said, Madam, आपकी ना इदारे में औरतें बहुत हैं. तो मैंने उन्हें कहा कि और अब एक औरत इसकी सरबराह भी है. So because you know that was the response, कि there's no such thing as too many women. We do have a token man or two in the office too, but we have a lot of women and a nice daycare as well. Yeah, the tables have turned. But that kind of takes me into the next question that I wanted to ask you, which was, has there ever been any mentor who has guided you through your career? So in terms of not just, because of course when we're working, it's not just strictly the work that we do, it's so much more than that, right? It impacts, it seeps into our personal lives and everything. So was there ever a mentor that kind of, you know, guided you in a lot of these different ways? And, you know, when people are looking for mentors, what are some of the things that they should kind of, you know, keep in mind? I think that you have to be willing to learn from everyone and anyone. So, मैंने जब भी किसी से चाहे letter of recommendation चाहे या कोई advice चाहिए, तो मैं I have gone and talked to them. I've asked them. I've had the shamelessness to go. What's the worst that will happen? वो interested नहीं होंगे, वो rude हो जाएंगे, या वो आपको लंबी सी कहानी सुनाएंगे, वो सारी कहानी उनके बारे में होगी, और आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा. But it's a probability game at some level. You keep going, and there's no one person who's a perfect mentor. Just like I don't think there can be a best friend. If you have the same best friend your entire life, it means you haven't changed enough, both of you. So I think that you have friends, some friends are your childhood friends, and you have that with them. Some friends are your friends at work, and some friends may be your sister, you know, who shares the same set of parents. So similarly with mentors, there will be mentors in your personal life, in your professional life, but no one person will have everything. When you're progressing through these different steps of your life or your career or whatever, we look to other people for, like, you know, help and everything, and I feel like it makes sense that it's coming from, you know, a bunch of different sources than just one person. But, you know, this is a follow-up question to what I asked before, and it's mostly around, you know, because Pakistan is has a very relational culture, right? Like, if you know someone from the get-go or has some sort of a shared connection, it's easier to reach out to people. But what would your advice be to someone who is not necessarily acquainted with a lot of people in a space, whatever space that they're in? Like, what do you think are some of the best ways of kind of, you know, reaching out to people for that kind of advice? So as I said, कि मेरा पूरा family का setup healthcare में है, Chughtai labs and all that, and my older brother is. I picked education, and I'm the first PhD in my family, and I'm also the first bureaucrat or something. But I think that the people who have made it to the top recognize that there's a certain level of shamelessness that you have to have. Shamelessness is a negative word, but like thick skin. हाँ, आप में या एक drive होती है कि you will go and talk to people, you will ask, and you will not be embarrassed. अगर कोई बंदा जो रिलेशनल है, अगर आप किसी बंदे को रीच आउट करते हैं और वो आगे से आपसे इसलिए बात नहीं करता कि हमारा कोई जानने वाला नहीं, तो आप शायद उस बंदे से वैसे ही कुछ नहीं सीख पाएंगे. तो इस चीज़ पे आप अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट करें.
अगर आप एक हायर टियर में नहीं नेटवर्क कर पा रहे, दैट्स फाइन, आप अपने टियर में नेटवर्क करें, आप अपने टियर में लोगों से पूछें, बिकॉज आई थिंक दैट इफ wherever you have that mindset के because I am a woman या because I am not from this या because therefore मेरे लिए ये gates बंद है, yeah, but there are other gates that are open to you because you are in that position. For leaders, I feel like it's really important to kind of learn and unlearn as they grow throughout the process, right? What do you think are, some in your kind of career span and everything, how have you been able to do that? Learn and unlearn is extremely important. I think आपके लिए एक comfort level होनी चाहिए to feel incompetent, कि आपको कुछ नहीं आता. जिस दिन आप महसूस करना शुरू करते हैं कि आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छी आती है, you have to go to a different place जहाँ पे you feel incompetent, because as long as you start getting used to being the best, तो फिर आपकी learning slow down हो जाती है. Yeah. I feel that leaders are in a constant learning mindset and they are comfortable with feeling incompetent. They are comfortable with being uncomfortable. And so that kind of brings me to the fact that you're writing, in the process of writing your book, right? Can you tell us a little bit about what that is, what that looks like right now, but also what the book is about, and Sure. A little bit about that. Yeah, so it's a very interesting story because आप ज़िंदगी में होते हैं, आपको पता नहीं होता 20-30 साल बाद क्या हो रहा होगा, but it's kind of like you wrote it. So मैं Lahore School of Economics में I was in a private business school doing a BBA. I'm an 80s kid, I'm the Zia generation. तो उसमें हमारे टीचर जो political science के थे was at that time Senator Shafkat Mahmood, who later became the Federal Minister of Education in the previous government. तो वो हमारे टीचर थे, उन्होंने एक किताब प्रिस्क्राइब की आयशा जलाल की, जिसमें एक चैप्टर था 1971 पे. I read that chapter and I was very surprised that this is my history and I have absolutely no idea about it. There was, of course there was the shock element of what happened, but there was a larger level of betrayal as a citizen, as a young person. This is not some ancient history. This was 30 years ago. So why did I not know about this? And that's when the penny dropped for me that education is a political tool. Just because एक चीज़ किताब में लिखी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि वो सच है. और किताब में जो नहीं लिखा हुआ, वो hidden curriculum है, जो आप by omission जो आप commission करते हैं. So I said that this is something I'm very passionate about, to understand how do you create identity, how do you create एक पूरी generation का एक mindset कैसे बनाया जाता है. And life took its turns in all kinds of places. And then I was graduating from one of the best programs in education with a PhD, and my topic was what produces a history textbook. And I wrote my entire thesis on all the curriculum reforms of Pakistan, और पाकिस्तान की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम 47 टू डेट, उनमें इन सारी वॉर्स के बारे में किस तरह से डिपेंडिंग अपॉन आपकी पॉलिटिक्स क्या थी, हिस्ट्री को कैसे बदल के पढ़ाया गया है. और जब मैं ग्रेजुएट करके निकली और मैं आई पाकिस्तान विदाउट अ जॉब, आई जस्ट न्यू कि मैंने पाकिस्तान वापस जाना है. आई वांटेड टू बी बैक हियर. द फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब आई गॉट, Shafkat Saab was Federal Education Minister, National Curriculum Council was making a curriculum, and I was brought in as a history expert for social studies. And we worked on that, and I'm very, very grateful to God कि मेरे पास ये मौका है ज़िंदगी में. हमने अब जो 6 to 8 में जो history textbooks बनाई हैं, it's a very honest history. It has a detailed chapter on all of our wars, and a reflective approach कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं. My mother used to say, people who don't learn from their history, their geography changes. And that is the story of Pakistan in some ways. For sure. So that's how I got interested in this topic, and I'm very lucky that I wrote a dissertation on this, and now my book is on this topic also. ये नहीं मुझे पता था कि किताब लिखते लिखते I will become a character in the book. जो अब curriculum reforms हो रहे हैं. Yeah, I'm leading the current curriculum reforms, but hopefully it will be done in about a year or two, and then wonderful.
and we'll see how it comes. But no, I love your point about like, learning about history and where we learn it from. Yeah. Because unfortunately, it's never from the textbooks, right? Sure. Like even for me, like I think a couple of years back when I read Reza Rumi's Being Pakistani, that's when I found out so much about like, Sindh and like, the historic like, significance of like different gender figures and like, things like that. So I feel like it's really important. I'm really excited to read it whenever it comes out. What does success mean to you? That's a philosophical question, but I think that if I was, it's a very nice building, by the way. If I was a painter, like painting the walls, I would like to be the best painter. Yeah. If I was the janitor, or if I was the CEO, I think success is being the best at what you do. Yeah. And deriving satisfaction from it. Not because you are in a race with someone else, not because कि आपसे आगे कोई ना निकल जाए, but excellence, I think, is success. Feeling that you have done your job well, and it helps you feel more content. That is what success is to me. So how do you deal with, because that's certainly not a lot of the times what society thinks of success as, right? And so when those constructs come at you a lot of the times in terms of, what people perceive success to be versus like your idea of success, which is shared by, of course, a lot of other people as well. How do you take that? Oh, that's interesting. जब मैं PhD करके आई, and from a leading university, तो मुझे बड़े close रिश्तेदारों ने मुबारकबाद दी कि अल्लाह तुम्हारी बड़ी खुशियाँ भी पूरी करे, because I wasn't married with children. So success in our society for a woman is if you're not married with kids running around, you're not really a success. It doesn't matter what else you achieve. Yeah. And it's the flip for men also, that if they're not a provider, if they're not earning a certain, उन्होंने घर नहीं provide किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, it doesn't matter if they're a great father. It doesn't matter if they're a gentle soul or if they're artistic. What matters is their salary, चाहे हलाल की है, चाहे हराम की है, लेकिन salary होनी चाहिए. So it works both ways. So I think what happens is when you become an atypical case of success, when your definition of success is different from the mainstream, it can be a lonely place. But I find it to be a place of solitude. I don't find myself lonely. I find it to be empowering, that, this is my space and I like it. No, that's lovely. And then do you feel that a lot of the times it's almost contagious? Because if you're, how they say, if you're free, you also free other people with you. So when you're kind of past that, kind of traditional ways of looking at success and all of those different things, especially being a woman, right? Do you I feel hope so. It's not an agenda I don't see myself as a role model, but if I am, so it's good. I just adopted a baby girl. Oh my God. And I hope that through that, I normalize something for women and men and couples that, like you said, you want it to be contagious, that people are just not thinking out of the box. And simple things can bring a lot of joy to their lives. And I think that, I didn't adopt as a social service to the society, but I hope that it has that ripple effect. Yeah. Congratulations on that. Thank you. I love that. And so the second part of that is, of course, we can't talk about success without talking about failure, right? So what does failure mean to you? Failure, I think, is something you need to be addicted to. It's something it has to be on a daily basis. You have to. It kind of links to जो मैंने आपको पहले कहा, incompetence के साथ एक comfort develop करना. कि आप if you have not failed, you have not tried hard enough. You are just staying in the safe zone. So failure for me is constantly testing कि मुझे यहाँ तक आता है और इससे आगे नहीं आता. तो थोड़ा सा अपने आप को इसके लिए mentally prepare करना होता है कि आप constantly इसमें रहें कि okay, what did I not do right? What did I not do right? But failure for me is an essential day-to-day activity that one needs to be completely addicted to. And only out of that path you can be successful. So what you said about,
just being comfortable with not knowing, essentially, right? And then versus a lot of the times I feel like when we're, and this is something that I've felt, so it's probably not necessarily everybody else's experience, but a lot of the times you're kind of, made to kind of feel uncomfortable if you don't know something about whether it's like, something that is related to your work or like whatever. And so that can be like almost, that can manifest itself almost as like a sort of peer pressure where you're almost kind of pushed to pretend that you do know everything, right? Like how do you kind of push back on that, like personally, and you're like, no, it's actually like, I'm going to stay grounded and, it's like, just be comfortable with that. I think ये जो यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर आप इंडिया में one of the largest companies, Tata, has an annual best failure award, but in Pakistan, if someone fails, we make fun of them. और आप जो बात कर रही हैं कि अगर कोई गलती करता है तो उसको रिडिक्यूल किया जाता है, तो आपकी जब बेइज्जती हो रही है तो उस वक्त आप कैसे सेलिब्रेट करें कि आप कितना ग्लोरियसली फेल कर रहे हैं. आई थिंक कि जब आप मल्टीपल दफ़ा फेल करते हैं, आप पे एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी नाकाम होकर सीख चुकी हूँ. तो यहाँ पर जो मुझ पे तनकीद की जा रही है, यहाँ पर ये जायज़ नहीं है, ये वाली बात जायज़ है. तो जब आप इस माइंडसेट में रहते हैं कि जब आप पे कोई तनकीद भी कर रहा है और वो किसी हद तक उसमें जायज़ नहीं भी है या उसमें बदतमीज़ी का भी एक अंसर है, तो आप उसको इस तरह देखते हैं कि अगेन यू ट्राई टू सेपरेट इट. इट्स नॉट ईजी टू डू एंड समटाइम्स यू आर हैविंग अ बैड डे और वो आपको ज़्यादा हिट करता है. बट वक्त के साथ आप जब इससे कंफर्टेबल हो जाते हैं कि लोग आपको कुछ बता रहे हैं, टोक रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ सुन रहे हैं कि वो आपको क्या रहे हैं, तो वक्त के साथ आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. आपको ज़रूरत भी नहीं रहती अगले बंदे को बताने की कि आप मेरा मजाक गलत उड़ा रहे हैं. और एंड देन यू सॉर्ट ऑफ गेट पास्ट इट ऑलमोस्ट. And my last question to you is, what advice would you give your younger self? My younger self? I think I'm still my younger self. I think that... That was a trick question. No. I don't mean it in a biological sense. I mean it in a psychological sense. That, हम young और old को ऐसे define करते हैं कि young is naive, doesn't know or anything. And old is you've learnt everything. But I think वो जो learning mindset है, जो failure mindset है, वो अगर आपका हमेशा रहे, एक agility रहे, दिमाग में रहे, आपकी physical fitness, आपकी mental fitness, ability to prioritize yourself and your life and your family and your relationships, there's no right or wrong time for that. It's always the right time to do that. So I think younger self का सिर्फ एक aspect अगर मैं कहूँगी तो ये है कि I would tell myself that time will give you perspective. When you're younger, so some things seem bigger than they actually are. And some things seem smaller than they actually are. So I think it's important to remember कि ये वक्त जो है, इस वक्त आपके पीछे सिर्फ 20 साल हैं. जब आपके पीछे 40 साल होंगे और जब आपके पीछे 60 साल होंगे, तो आपका perspective उस वजह से बदलेगा. There's nothing you can do right now to get those 40 years of wisdom and 60 years of wisdom in some kind of a book or something. You can learn a little bit, but the experience of living in itself is such a joy. So I guess I would just tell myself to stay young and enjoy the ride. I love that. Thank you so much, Mariam, for your time. It was lovely talking to you. Likewise, truly. Thank you. And thank you for sharing your wonderful news of adopting a kid with us as well. It. Thank you so much. So I will say कि जो around the world, already universities, for instance, were becoming outdated. और pandemic ने universities को और भी outdated कर दिया है. As a lot of people saw first hand कि हमें physically वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने हज़ारों डॉलर, पाउंड, living expenses और वो देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ हमें virtual भी पढ़ा सकते हैं. Schools, the way they are structured right now, are getting in the way of learning. So let's say आज हम गवर्नमेंट जो है automatically somehow overnight बहुत ज़्यादा computer science सब चीज़ों का कर भी देती है. But even then, learning is such an individualized process कि ये इस तरह से mass regulate हो ही नहीं सकता. जो industrial model है, जैसे सबवे का सैंडविच बनता है,
ये अभी भी उसी पर चल रहे हैं कि अभी सब पे जो मेयोनेज़ लगेगा, अभी सब पे टमाटर लगेंगे, उसके बाद सब पे व्हाट चॉइस ऑफ मीट, दैट्स द मोस्ट कि आपने इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, वो वाली आपको चॉइस है, बट गुजरना सब ने इसी में से। आप जिस दुनिया में आप ग्रो कर रहे हैं, जिसमें आप व्हेन यू आर अ यंग पर्सन, you have access to the internet, you have access to a lot of learning online, which is an untapped resource. I tell you, when I went to graduate school, and I just couldn't get over the fact that there are books, कि कोई बंदा 200 साल पहले को बात लिख के गया और आज मैं उसकी बात पढ़ सकती हूँ. But you have access to the internet also. There's so many online courses, and now so many of them are free. I would recommend, even if we were in a very functional country with a lot of access, even so, it is important for you to make your own path. अपना रास्ता खुद बनाएं, इंटरनेट पर जाकर अपनी लर्निंग की खुद जिम्मेदारी लें. और आप ठीक है, वो परफेक्ट नहीं होगा या बहुत अच्छा भी शायद नहीं हो, लेकिन जिस पैसिव अंदाज से हमारी जनरेशन बैठी है ना, कि जिस दिन हमारा स्कूलों का निज़ाम, यूनिवर्सिटियों का निज़ाम ठीक होगा, फिर हमें तालीम मिलेगी, फिर हमारे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर होंगे. मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज आप अपने जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर कर सकते हैं. ये ई-कॉमर्स का ज़माना है, ये डिजिटल एज है, इसमें इट इज़ द ग्रैंड इक्वलाइज़र. सो माई सजेशन वुड बी कि आप इस इंतज़ार में ना रहें. गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए और कर रही है, लेकिन इसकी आपको उतनी ज़रूरत नहीं है जितना आज की जनरेशन सोचती है. इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन कि एक कॉन्टिन्यूटी नहीं है पॉलिसीज़ में, और बच्चे का बहुत कम ही कोई लोग हैं जो सोच रहे हैं. मेरा काम एज अ पॉलिसी मेकर इज़ टू कि पॉलिटिशियन को दिखाएं कि बच्चे का इंटरेस्ट पॉलिटिशियन के इंटरेस्ट से कैसे ओवरलैप करता है. और कई जगह वो ज़रा आसान होता है, कई जगह वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो आपका सियासतदान है उसने अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी देखना है और उसके बाद उसने अवाम का इंटरेस्ट देखना है. अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की स्टोरी बन चुकी है, और इसी वजह से हमारे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो चलते चलते बंद कर दिए जाते हैं. इस केस में हमारे सियासतदान बहुत मतलब डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं. आई थिंक कि जो आपका लार्जर क्वेश्चन है कि क्या इस चीज़ का ख़दशा है कि ये काम जो है ये आधे रास्ते रुक जाए, बिल्कुल है, बल्कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इसकी. लेकिन शुड वी देन नॉट डू एनीथिंग? शुड वी देन ऑल 200 मिलियन ऑफ अस रीलोकेट? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक दिस इज़ आवर कंट्री, एंड कोई यहाँ से धक्का लगाएगा, कोई वहाँ से धक्का लगाएगा. अभी जो पहले भी सवाल हुआ था उस हिसाब से भी मैं आपको कहूँगी कि आज आपका यूथ जो है ना वो बहुत वोकल है इस मामले में. वो जैसे इंटरनेट है, अभी जैसे विकिपीडिया बैन हुआ है या यूट्यूब बंद हो जाता है, ये आज से 15 साल पहले आई थिंक यूट्यूब बंद था, और जब यूट्यूब वापस आया ना तो हम लोग आपस में कोई बात नहीं कर रहा था कि यूट्यूब वापस आ गया, क्योंकि हमें था कि शायद उन्हें पता नहीं है कि यूट्यूब वापस आ गया. अभी जब कोई चीज़ बैन होती है ना तो पीपल स्पीक अप, यू नो. सो I think the times have changed. I think it will not be that easy anymore for a country as young as Pakistan. इसके इतने लोग जो हैं वो young हैं, connected हैं, आपस में collective है उनका एक, कि आप इतना मतलब top down किस्म से फैसला कर सकें. I don't think so, and I think our future, because of that reason, it may get worse, but it will then get better. I hope so at least. For instance, सिंध ने जब अपना रास्ता अलग किया था वो इसलिए किया था क्योंकि सिंगल नेशनल करिकुलम में दे फेल्ट के फेडरल वफाक जो है वो सूबे पर इम्पोज कर रही है, और 18th अमेंडमेंट के आर्किटेक्ट रज़ा रब्बानी हैं जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं. लेकिन अब जब कि हमने सिंगल का लफ्ज़ भी हटा दिया है और हमने उनको बताया है कि कोर मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं और उनके साथ, तो सिंध में जो सरदार अली शाह साहब हैं जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है सिंध इज़ वेरी मच ऑन बोर्ड. उन्होंने एक ही दफ़ा कच्ची से 8वीं तक का निसाब अपनाया है, और अभी मैं जा रही हूँ हैदराबाद जा रही हूँ. सिंध इज़ द फर्स्ट प्रोविंस जहाँ पर हमारी मैसिव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो चुका है. सो फॉर इंस्टेंस आपका एक कोई शहर है या कोई
कुछ छोटी सी जगह है, वहाँ पे एक पब्लिक स्कूल है जहाँ पर टीचर है, वही वाली बात कि वो क्लास में ना सवाल पूछने देती बल्कि वो क्लास में आती ही नहीं है या वो बच्चों को मारती है। उसी के साथ में एक लो फी प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे उसी कम्युनिटी से एक और टीचर है, वो टाइम पे भी आती है, बच्चे को पढ़ाती भी है, चाहे रटवाती है, लेकिन उससे पब्लिक स्कूल वाली से बेहतर है। हम में कोई खसलतन ख़राबी नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, ये इंसेंटिव्स का सारा मसला है। जब आपका गवर्नमेंट सेक्टर इंसेंटिवाइज ही नहीं करता कि एक टीचर जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जाता है, लेकिन उसका वो बेशक कुछ भी सीख के ना आए, सिर्फ इस पे इनपुट बेस्ड एवेलुएशन है कि उसने प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स किया। और ये सिर्फ आपके गवर्नमेंट से नहीं है, आपका डोनर का इतना पैसा यहाँ पे आ रहा है जो कि सिर्फ इनपुट ड्रिवन है कि आपने कितना पैसा खर्च किया, आपने रिपोर्ट कितने महंगे कागज़ पर प्रिंट किए, उसमें कितने रंग लगाए, सारी इनपुट बेस्ड है, आउटकम बेस्ड एवेलुएशन कहीं नहीं है। लो फी प्राइवेट स्कूल में आउटकम बेस्ड है, उनके बाहर लगा होता है कि हमारे इतने बच्चों ने इतना ये नंबर आए, चाहे रट्टे के आए, लेकिन उन्होंने आउटकम लगाई हुई है बाहर। सो मैं इस अप्रोच से डिसएग्री करती हूँ कि जो हमारी करंट पूरी जो टीचर्स का ग्रुप है उनको उठा के कहीं ट्रांसपोर्ट करके कहीं और भेज दें और नए लोग आएँ, ऐसे नहीं होता। वो हमारे ही लोग हैं। टीचर्स टीच हाउ दे वर टॉट, it's a basic principle, but I think if you align the incentives differently, I think you can help adults learn. हम अपनी टीचर ट्रेनिंग मैनुअल्स जो बनाते हैं उस पर पेडागोजिकल टेक्निक तो सिखाते हैं, हाउ टू टीच, हम कंटेंट भी सिखाते हैं, because many of these teachers don't like being asked questions because they don't know the answer. उन्होंने भी रट के पढ़ा हुआ है। So you have to understand where they're coming from. पाकिस्तान में एजुकेशन में सबसे आसान है टीचर को बुरा कहना, लेकिन इस कमरे में कोई भी ऐसा नहीं है, माई सेल्फ इंक्लूडेड, कि अगर आप हमें कितने भी पैसे दे दें तो हम एक साल के लिए जाके किसी पब्लिक स्कूल में टीचर लग जाएं, नहीं जाएंगे, पर वो लोग करते हैं काम। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड आई थिंक दैट इफ़ वी वर्क फ्रॉम विद इन वी कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। We looked at the word curriculum in its entirety. Curriculum को लोग standards, वही जो मैं कह रही थी, कोई किताब निसाब और किताब को एक समझता है, कोई निसाब और standards को एक समझता है, whereas these are different things. Curriculum has 4 components, essential components: standards, textbooks, teachers and assessments. They are like 4 wheels of a vehicle. If you remove one wheel or if one wheel isn't moving, the car cannot move. So when we say curriculum reforms, it doesn't mean कि आपने सिर्फ अच्छे मेयारात सुनहरे हरूफ में लिख दिए। 2006 का भी निसाब बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स थे, लेकिन पब्लिक स्कूल्स में वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। जब तक आप टीचर ट्रेनिंग नहीं करते, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब तक आपका इम्तिहान किताब से हट के कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता, बाकी सब कुछ अलाइन हो जाएगा। बच्चा वो पढ़ता है जो इम्तिहान में आता है, टीचर वो पढ़ती है जो इम्तिहान में आता है, पेरेंट उस स्कूल में डालेंगे जहाँ नंबर अच्छे आते हैं। आप इम्तिहान को चेंज कर लें, SLO बेस्ड कर लें, जो फेडरल में और GB में होना शुरू हो गया है। किताब ओपन बुक एग्ज़ाम्स कर दें, बट यू हैव टू गो एट अ पेस दैट पीपल कैन हैंडल, तो आपका सारा सिस्टम बड़ी जल्दी इवॉल्व कर सकता है। एंड येस, वी आर वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इट विल टेक टाइम। I will hand over to someone else who will do it, who will hand over to someone else who will do it. But that is how it will happen. I think implementation में एक सबसे बड़ा हमें hurdle जो आ रहा है वो 18th amendment है, क्योंकि जहाँ पर आप कहीं पर भी प्रोविंस को अकाउंटेबल रखना शुरू करते हैं, वो कहते हैं 18वीं तरमीम कि हमारा मैंडेट है। अब 18th amendment को भी आए हुए 12-13 साल हो गए, 2010 में आई थी। कोई इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म नहीं है। आप इस्लामाबाद से पिंडी आता है बच्चा, अगर घर मूव करता है, उसकी किताब डिफरेंट हो जाएगी। वहाँ पर इस्लामाबाद में डिफरेंट NOC मिला हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट NOC, या यहाँ पे उस किताब को NOC नहीं मिला हुआ पंजाब का, कोई वो मैकेनिज्म नहीं है। बट द वे वी हैव लुक्ड एट इट, वी मेड अ स्ट्रेंथ आउट ऑफ दैट वीकनेस। हमने सूबों को आपस में इन कॉम्पिटिशन एंड इन कोलैबोरेशन कर दिया। अगर सिंध में टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है, तो बाकी बलूचिस्तान पूछ रहा है, हमारे भी मल्टी ग्रेड क्लासरूम्स हैं। सो यू हैव टू गो इन अ वे,
हमारे लिए एक साइज़ भी थोड़ा सा मैनेजेबल हो गया है। इम्प्लीमेंटेशन रियलिटीज़ डिफरेंट है। गिलगित बल्तिस्तान ख़ास तौर पे स्टेम एजुकेशन पे मिडिल स्कूल में फोकस करना चाहती है, वहाँ पर हम लोकलाइज पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू बी अ नेशनल लेवल द वे अगर यहाँ पे एजुकेशन डिसेंट्रलाइज ना हुई होती, बट शायद डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से एजुकेशन कुछ एरियाज़ में बेहतर होती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा ने 6ठी से 8वीं की अपडेटेड टेक्स्ट बुक्स लगाई, पंजाब ने 6ठी से 8वीं की बनी हुई अपडेटेड टेक्स्ट बुक्स, आखिरी सेकंड पे गवर्नमेंट जब हिली है उन्होंने पुराना 1995 वाला 2006 वाला करिकुलम लगा दिया। इसमें बहुत सारा सुनने में आया है कि बहुत सारे किकबैक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिशर्स के, लोगों की लॉन्ग टर्म इनकम है, सुनने में आया है। मेरी को कंफर्म मैंने कोई डील होती देखी तो नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर आप एक सूबे में कुछ चेंज लेकर आएंगे तो पेरेंट्स में, यंग लोगों में जब ये डिमांड क्रिएट होगी, जैसे इस नेशनल करिकुलम रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट ने एक डिमांड क्रिएट की, इट मेड इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर द चेंज इन गवर्नमेंट, चाहे वो जिस तरफ भी होती, टू अनडू इट, क्योंकि देयर वाज मेरिट इन द आइडिया। सो आई थिंक दैट इफ़ वी प्ले टू आवर स्ट्रेंथ इन दैट वे, maybe implementation we can make more traction than we are thinking. Everyone has a different issue, equally difficult, but a different issue. So for instance, Punjab mein, what I have found is that there is so much bureaucracy and there's such turnover of the people that you're working with, transfers hoti rehti hain. प्लस आपका डोनर सेक्टर आके, एंड दैट्स ओवरऑल इन एजुकेशन, इतनी डिपेंडेंसी क्रिएट कर चुका है लोगों पे कि वो जो डोनर सेक्टर की सैलरीज हैं एंड रियली नो सॉर्ट ऑफ आउटकम दैट्स एक्सपेक्टेड। सो बलूचिस्तान में बहुत निगलेक्ट है। वहाँ पे बात स्टार्ट ही होती है कि 90% हमारे क्लासरूम तो सिंगल टीचर क्लासरूम्स हैं, और ऐसे भी क्लासरूम्स हैं जिसमें एक क्लासरूम जिसमें मेरी कॉलीग ने जाके इंग्लिश पढ़ाई थी, 21 बच्चे थे, 7 ज़ुबानें बोलते थे, उनमें से एक भी अंग्रेज़ी नहीं थी। शी वॉज देयर इंग्लिश टीचर, छोटे बच्चे थे। सो डाइवर्सिटी, लो रिसोर्सेज। सिंध में ख़ास तौर पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ Sindh में there's a lot of delay in working, but I'm just saying कि this is a different problem in every province. हमारे लिए बड़ा आसान है हम टेम्परेचर कंट्रोल कमरे में बैठ के कि एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, बट इट्स आप एक बच्चे को दिखा रहे हैं कि जी वो देखो चांद और ये फिज़िक्स है और ये बच्चा भूखा है, उसको जानने कि ये गोल है, रोटी की तरह गोल है। So it's easy for us to sit and say कि जी सिंध में लोग किकबैक्स लेते हैं, ये वो। I mean, people are not dumb. अगर यहाँ पे एक बिरयानी की प्लेट पे वोट बिकता है तो इसका मतलब है कि लोगों के पास इतना खाने को भी नहीं है। People are making a very intelligent choice. So we have to really meet people where they are, and I think that's the main difference with this project. This is the first indigenous national level education reforms project that is happening. अभी तक पिछले 15 साल से 2006 से कम से कम जब वर्ल्ड बैंक आया और सब कुछ डोनर फंडेड है, यानी कि गवर्नमेंट आपकी सवाई टीचर सैलरीज देने के एवरीथिंग इज़ डोनर फंडेड। केपी में मुझे किसी ने बताया कि हमारे पास डिजिटल ब्लैक बोर्ड्स आ गए जो हमने लगाने थे 80, तो हमने बस वही लगाने थे, तो हमने जाके उधर लगा दी जिन स्कूलों में बिजली भी नहीं थी, क्योंकि हमने वही लगाने थे। कहीं ना कहीं उस डोनर एड या लोन या उसके अगेंस्ट कोई ना कोई फेवर पाकिस्तान ने दिया होगा। देयर इज़ नो फ्री लंच। तो ये आपके सेक्टर में जो इस तरह के काम हुए हैं पिछले इतने सालों से, सो दिस हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्क्यूड इंसेंटिव्स, एंड द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज़ कि हम जब जाके बात करते हैं, मैंने जो कराची में किए सारी उसकी डिस्ट्रिक्ट्स के गाइड टीचर्स के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन की, मैंने उन्हें कहा मैं उनको क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, पूरा हमारा मॉडल बना हुआ था, मिनिस्टर ने अप्रूव किया हुआ।
तो उन्होंने कहा कि हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में जब टीचर की इवैल्यूएशन करते हैं ना, तो उसको पहले से ही फ़ोन आ गया होता है कि किसकी क्या लिखनी है, और वो सारे किकबैक सब कुछ डिसाइड होता है, और हम उस हिसाब, या ये होता है अगर हम सरप्राइज़ विज़िट कर लें तो टीचर ने एक लेसन याद किया हुआ है, वो जिस दिन भी आ जाए वो इवैल्यूएटर वो वही लेसन पढ़ा देता है, चाहे उसका पिछले दिन से कोई ताल्लुक हो या ना हो। अब ये बात वो कभी यूनिसेफ को नहीं कहेंगे जो वहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिसेफ उनका टीएडीए देता है, और वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल भी बड़ा अच्छा, वेरी नाइस लर्निंग आउटकम्स ये वो। But the fact that we are one step closer to the truth, we are learning what's happening, and we are like, okay, not doing this, maybe some digital aspect of evaluation, maybe some more like a hybrid model. That is what makes me optimistic, that this is, in a long time, Pakistanis are taking the initiative to try and figure out what's wrong with Pakistan and not outsourcing our problem solving. जब मैंने position संभाली, SNC year 2 चल रहा था तब बहुत बैकलैश था, ख़ास तौर पे किताबों के हिसाब से कि ख़ास किताबें जो थी बच्चों में, और साथ ही साथ बहुत फोकस था कि हमने बच्चों को सीरत नबी पढ़ानी है और सल्लम और उनको कैरेक्टर बिल्डिंग करनी। एट द सेम टाइम स्कूलों में सुनने में आ रहा था कि क्योंकि वहाँ पर जजेस जाके ताले लगा रहे थे कि स्कूलों में ये किताब पढ़ाई जा रही है कि नहीं पढ़ाई जा रही है, तो स्कूलों ने सेट रखे हुए थे SNC की किताबों के कि जब इंस्पेक्टर आएगा तो बच्चों को कहा था कि वो डेस्क पे रख लेना, इंस्पेक्टर को 30,000 रुपया रिश्वत देंगे, वो जाएगा तो फिर रेगुलर किताबें निकाल लेना। अब इट डज़न्ट मैटर आप किताबों में जितनी मर्जी किरदार साजी कर लें, बच्चे को तो आपने सिखा दिया ना कि झूठ कैसे बोलना है, और हमारा टीचर भी झूठ बोल रहा है, हमारा स्कूल भी झूठ बोल रहा है, इंस्पेक्टर भी पैसे खा रहा है, और ये सब, और ये सही तरीके, ये ऐसे ही होता है। तो किरदार साजी इससे नहीं होगी कि आपने किताब में क्या लिखा है, किरदार साजी आपकी उससे होगी कि आप एक ऐसा फंक्शनल पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आएँ जिससे आप लोगों को इस पे मजबूर ना करें कि उन्हें झूठ बोलना पड़े। तो गवर्नमेंट हैज़ टू लुक एट इटसेल्फ कि हम क्या ऐसी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन में तो नहीं लोगों को डाल रहे कि वो स्कूलों में झूठ बोलने को प्रमोट करें। दूसरी बात ये है कि हमने करिकुलम में अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज़्यादा सिटीजनशिप, डिजिटल सिटीजनशिप, ग्लोबल सिटीजनशिप, इन सारी चीज़ों को बहुत एम्फसाइज़ किया है। और आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम पीपल कि पाकिस्तान स्टडीज़ इज़ एन अंडर यूटिलाइज सब्जेक्ट, कि पाकिस्तान स्टडीज़ शुड बी अबाउट पाकिस्तानियत एंड व्हाट इट मीन्स टू बी अ पाकिस्तानी सिटीज़न टुडे। पाकिस्तान में आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ में क्लाइमेट चेंज की बात करें, अगर इकबाल के 1930 के खुतबे के बारे में 6 to 8 में पढ़ लिए तो आप इकबाल की फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, एक मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान को पढ़ें। सो आई थिंक दैट दोज स्टेप्स ग्रेजुअली विल हेल्प create a more responsible citizenry. But like I said, the hidden curriculum in schools is a much more powerful tool for what kind of ethics a child takes home than what goes in the textbook. Thank you so much for listening to us today. Thank you so much to Mariam for being with us. Please subscribe to our social media channels. Thank you. Have a nice day.